All right, Assalamu alaikum everyone. So we are going to start with October-November 16 paper 2 today. Okay, so let's begin. Just a reminder, I've uploaded all the previous recordings on past papers on the YouTube playlist that I shared with you. उसके ऊपर सारी ये recordings available हैं of all the papers that we've done until now. Now, from now on, what we will also do is we will have more frequent classes. So हमारी classes होंगी minimum 6 days a week from now. So Sunday के अलावा we'll have classes every other day, and the time is going to be 3 o'clock every day, inshallah. Okay, so unless there is some change, we will have a regular time at regular class at around 3 p.m. every day. Does that sound okay? Is that okay? 3 p.m. Is that fine? Does that work for you? Okay, so I'll also share in the group to just confirm if it suits everyone. So I've been traveling for some time, so because of which I could not take classes in the last week, but hopefully we will have it. We'll have our classes more regularly and also more frequently now. Okay, so let's start with this. This is October-November 16, paper 2, variant 2. All right, so let's start with the first one. So the basic price of the it says the basic price of the 2016 model of a car is $21,000. Saeed and Rashid each buy this model of car. Saeed pays a deposit of $756. Calculate the deposit Saeed pays as a percentage of the basic price. Okay, so the base price is $21,000. Okay, and what Saeed is doing is he's paying a deposit of $756. Right, so पहले वो down payment करे, and the rest is going to be paid as monthly payments, as it says here. So it's making a down payment beforehand. Okay, that's of $756. Now we have to calculate the deposit as a percentage of the basic price. Okay, ये कितनी percent है basic price का? So what do we do for that? The amount, that's 756, divided by the total, that's 21,000, multiplied by 100%. Right? So 756, 21,000 का कितना percent है? This is how we can calculate that. Right? So आप ये calculator से evaluate करोगे और आप देखोगे आपके पास क्या आता है. 756 divided by 21,000. So I don't have my calculator with me, so my calculations will be relatively slower today. I might have to use my computer for this. So if you can give me the answers quicker, that will be helpful. So what do we get from this? 756 over 21,000 into 100%. क्या आता है? Okay, good. 3.6. So that's 3.6%. So we get 3.6% here. That is our result. Okay. Now he then pays 24 monthly payments of $922. Calculate the total amount Said pays as a percentage of the basic price. Okay. So now there is an initial deposit he's paying. Okay. That was $756. So let's find the total amount first. Total amount कितनी थी? Total amount was $756 plus 24 payments of $922. 24 into 922.25. So let's calculate what this total amount is first. So what do we get from this? What is the total amount? What is this total amount? $756 plus 24 into 922.25. Okay, so I'm getting 22,890.
22,890. That is the total amount that we get from this. Okay, ये total amount आ गई. Now we have to represent this as a percentage of the basic price. अब ये number जो है basic price का कितना percent है? So again, we use the same method as before. We say 22,890 divided by the original. The original amount was 21,000 into 100%, right? And that will give us some value. 22,890 divided by 21,000 multiplied by 100%, and that gives us 109%. That's 109%. That is the total amount that Said pays as a percentage of this basic price of $21,000. इसका क्या मतलब है 109% का? इसका मतलब असल में ये है जो भी बेसिक अमाउंट थी उससे 9% उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, right? 109% of the basic price यानी 9% ज्यादा पे करना पड़ रहा है, right? Because वो installments में अगर डायरेक्ट कैश पे वो खरीदता तो this would have been $21,000, लेकिन वो क्यों इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, he ends up paying more than that. Okay, so that's 109%. That's what you get here. All right. Now, Rashid pays a deposit of $381, followed by 36 equal monthly payments. The total amount that he pays is 127% of the basic price of $21,000. Calculate Rashid's monthly payment. अब हमें रशीद की monthly payment figure out करनी है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? एक आपकी basic price है. That's $21,000. Okay, that's the base price. जो टोटल अमाउंट इसे पे करनी पड़ती है दैट इज 127% ऑफ दिस बेस प्राइस. अच्छा, हम क्या करते हैं? वी कैन फाइंड दैट टोटल अमाउंट दैट ही हैज टू पे. सो टोटल अमाउंट दैट रशीद हैज टू पे, लेट्स फाइंड दैट आउट. वो क्या है? 127% ऑफ 21,000. हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट? यू जस्ट से 127% ऑफ 21,000 इवैल्यूएट कर ले. 127% of 21,000. That's the same thing as saying 127 divided by 100 multiplied by 21,000. ये आप evaluate कर लोगे, या आपको मिल जाएगी total amount जो उसको pay करनी पड़ती है. ठीक है? So total amount that Rashid actually pays. Okay. So what does this turn out to be? Let's evaluate this. That's 21,000 multiplied by 127 divided by 100, and that turns out to be 26670. Okay, good. Thank you. So that's 26670. That is the total amount that he has to pay. Now we have the total amount जिसको पे करनी पड़ती है. अच्छा, अब वो कह रहा है monthly payment आपने calculate करनी है. So over those 36 months, and also including this 381 initial deposit, the total payment उसकी monthly है that is equal to 26,670. हम क्या कर सकते हैं? We can say that initial amount 381 plus 36 multiplied by the monthly payment. Monthly payment क्या है? Let's call that x. 36 times x. इन सबको जब हम add करेंगे, इनको जो total होगा that should equal 26,670. यहाँ से हम x को evaluate कर लें. ठीक है? So we take 381 to the other side, we get 36x equal to 381 को उसमें से minus करें, 26670 minus 381. What do we get? We get 26289, 26289, and then we get the value of x from there if we divide that by 36. So 26289 divided by 36. What we get is 730.25. $730.25. So that is the monthly payment that Rashid has to make in this case, right? $730.25. Is that okay? Any issues with this? Okay, good. Now, the next part says $21,000 represented an increase of 5% on the basic price of the 2015 model.
तो अभी हम जो ऊपर बात कर रहे थे, we were talking about 2016 मॉडल ऑफ द कार, राइट? 16 मॉडल की प्राइस 21,000 थी। अब वो कह रहे हैं 21,000 जो था ऊपर, it represented an increase of 5% on the basic price of the 2015 model. Calculate the difference between the basic prices of 2015 and 2016. Now be very careful here. 5% आपने 21,000 का नहीं कैलकुलेट करना। Why? Because 2016 की अमाउंट है 21,000, 2015 की अमाउंट हमें नहीं पता, we don't know that, let's call that x. परसेंटेज जब भी आप कैलकुलेट करते हो इस तरह की परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, that's always calculated on the original, on the older number. 2015 का नंबर हमें नहीं पता, तो आपने करना क्या है, आपने x को इंक्रीज करना है 5%, यानी कि x plus 5% of x, that's 5 over 100 times x, that should equal 21,000. ठीक है, इसको हम डायरेक्टली हमने क्या कहा था, हम इसको लिख सकते हैं 105, इसको एलसीएम ले ले, बिकॉज़ क्या आता है 105 over 100 into x, that's equal to 21,000. ओके, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट होगी। ठीक है, so that's 21,000 into 100 divided by 105. You see what that turns out to be. हम देखते हैं क्या आती है, 21,000 multiplied by 100 divided by 105. Or 21,000 into 100 divided by 105. That gives me 20,000. ये मेरे पास आ गई अमाउंट 20,000, यानी कि 2015 के अंदर it was 20,000, 2016 के अंदर it's 21,000. So what is the difference? The difference is going to be $1,000. Difference is going to be 21,000. Okay. Acha. Now, all right. So you are basically asking, why are we adding x here? Why are we adding x here? Okay. So if you're talking about the difference, the difference कैसे आएगा? Yes, this is the difference. ये हमारा difference होएगा eventually. 5 over 100x. Yes, that is the difference, right? That's correct. हम यहाँ पे जो relationship बना रहे हैं, how are we building that relationship? We are basically saying, whatever was the original amount in 2015, if we increase that by 5%, we increase that amount by 5%. जो भी original amount थी, उसको हम 5% increase करते हैं, तो we should be getting 21,000. Okay? अब हमारे पास जो भी original amount थी, वो तो है ना वैसे ही, उसमें 5% और add कर दिया आपने. So जो भी original amount थी, उसमें 5% उसी amount का और add कर दिया, that will give you $21,000. Does that make sense? जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसमें उस अमाउंट का 5% आपने ऐड किया, then you get 21,000. ठीक है, उसमें ऐड करने से आपके पास वो अमाउंट आ रही है. So that's why we're doing this. Okay, so what we're basically doing is, we have the original amount, right, plus the increase, that is the new amount, right? इसको इस तरह लिख सकते हैं. We have the old amount or the initial amount plus the percentage increase or decrease, हम कहते हैं percentage change on the initial amount, that is going to give you the final amount. That's the concept that we're using, that we had some initial amount,
उसके ऊपर कुछ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो दैट इनिशियल अमाउंट इज इंटैक्ट, उसमें कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, दैट इज व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग, 5% of X, that gives you the final amount of $21,000. Does that make sense? So that's what we're using here. Okay. So you could also use that other method that you were saying last time. So that's final minus initial divided by initial, right? Or you can say new minus old into 100%. That's equal to percentage change, right? That's the formula. That's the other formula that you use, right? इसी को अगर आप rearrange कर लो ना, you'll have to deal with this percentage sign, but you eventually get to this form from there as well. ये दोनों एक ही formula है basically. You just rearrange this to get this one, and this one on top is actually much easier to use. It's much simpler to use. ऊपर वाली जो form है, but it's actually the same formula as the below one. आप नीचे वाला यूज करना चाहते थे, आप वो भी कर सकते थे. You would just say 21,000 minus X, आपको नहीं पता इनिशियल अमाउंट क्या है, divided by X multiplied by 100%. That's equal to percentage change. Percentage change कितना था? 5%. They got 5% there. ठीक है. Now you have to be a bit careful कि percentage sign जो है उसका अगर आपने खत्म करना है, you can do it like this. You can say this is 100 over 100, that's equal to 5 over 100. इस तरह भी कर सकते हैं. आप 100 को रिमूव भी कर सकते हो, वो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों साइड्स पे इसी तरह से. You can do that. Then you have to solve this further. और इसमें फिर एरर के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं, because you have to be careful कि 100 को आप x से भी मल्टीप्लाई कर रहे होगे, आप इसको 21,000 से भी मल्टीप्लाई कर रहे होगे, then you cross multiply after that, then you solve for x. You can do it like this if you want, but this is much simpler if you do it like this. Right? This is much simpler than that. Okay. All right. Assalamualaikum Abdullah, you're very late today. हम 2016 अक्टूबर नवंबर कर रहे हैं. जी 2016 October November. Yes. All right. So let's look at this. So we have the second question here. We have to simplify this. That's a fairly simple one. अच्छा यहाँ पे डिवीजन का साइन आ रहा है. ठीक है, डिवीजन का साइन को हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे. We have 3a square divided by 10 times bc multiplied by 5b square into c divided by 9 times a. Okay, हम देखेंगे कैंसिलेशन कहाँ पे पॉसिबल है. ठीक है, so नंबर्स की कैंसिलेशन देख लेते हैं. We got this 9 कैंसिल कर दिया हमने वहां पे 3 के साथ. We have 3 here, similarly 5 here, 5 and 10. We are left with 2 here. ठीक है, तो नंबर्स में हमारे पास क्या बच गया, 1/6. ठीक है, अब पावर्स देख लेते हैं. a के ऊपर पावर क्या है 2, नीचे क्या है 1, raised to power 1. What are you left with? और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a raised to power 2 minus 1. ठीक है, b की पावर्स देख लें. b की पावर्स क्या है, ऊपर 2 है, नीचे 1 है, so that's again 2 minus 1. c की पावर्स ऊपर भी a की c है, नीचे भी a की c है. That can just get cancelled out. 1 minus 1 c raised to power 0 हो जाएगा, 1 ही होता है. And what do you get from this? You get 1/6 into a into b, or you can say ab/6. Both are okay. So 1/6 times ab, or you can say ab divided by 6. Both are the same thing. ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. अच्छा, then you have to simplify this, h minus k over 5h minus 5k. Let's see if any cancellation is possible. So हम क्या कर सकते हैं, we can say h minus k in the denominator. We can take 5 common,
and that will give us 5 into h minus k. H minus k and h minus k, they get cancelled. Full expression same hai, and we're just left with 1 over 5 from there. Okay, so that's just 1 over 5 there. That's pretty straightforward as well. So then it says factorize this. ऊपर simplification करनी थी, cancellation हो रही थी, cancellation होके वो आपका कुछ simple form बन रही थी. Now it says factorize. Factorize का मतलब होता है किसी product की form में आपने करना है कि दो चीजें multiply हो रही हो आपस में, दो brackets multiply हो रही हो. You have to convert it to a form like that. ठीक है. तो यहाँ पे किस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन की आपको वो चीजें, एक तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा. फैक्टराइजेशन करने के और क्या तरीके होते हैं? वी रिमेंबर दोज आइडेंटिटीज दैट वी नो ऑफ, a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इसको अगर आपने राइट साइड को फैक्टराइज करके लिखना हो, इट बिकम्स दिस लेफ्ट साइड. सिमिलरली माइनस का भी होता है इसी में, ठीक है, a minus b whole square, you know about that. And there's another one that's a square, or you can say a plus b into a minus b, that's equal to a square minus b square. So factorization karte hue, you need to be aware of these three identities. आप अक्सर कहीं ना कहीं पे यूज करनी पड़ सकती है. So यहाँ पे आपके पास पहली दोनों फॉर्म्स में से कोई नहीं है, लास्ट फॉर्म बन सकती है. किस तरह से? We can say 9m square is the same thing as saying 3m का whole square, right? 9m square is just 3m का whole square minus 4n square, that's the same thing as saying 2n का whole square. ये आपके पास वो वाली फॉर्म बन गई है. That's a square minus b square, something square minus something square. Okay, so that gives you a plus b into a minus b, so that's 3m plus 2n multiplied by 3m minus 2n. So that's the factorized form. 3m plus 2n into 3m minus 2n. ठीक है, जो उससे फॉर्म दी हुई थी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, उसमें कोई ब्रैकेट्स नहीं आ रहे थे, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं थी. दैट वाज द सिंप्लीफाइड फॉर्म. जो हमने लिखी है यहाँ पे, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म. वो प्रोडक्ट बन गया, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही. All right, अच्छा, let's move on. Now you have to factorize this thing. ठीक है, रिमेंबर ये उसी तरह की फॉर्म बन रही है जिससे आप जब मिड टर्म ब्रेक कर रहे होते थे. जब मिड टर्म ब्रेक करते हैं, दरम्यान में दो ब्रैकेट से सेम आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है. क्या हम इनको किस तरह से सेम कर सकते हैं? इन दोनों ब्रैकेट्स को हम किस तरह से सेम कर सकते हैं? दिस इज p minus 2, दिस इज 2 minus p. एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक दूसरे का नेगेटिव है. कैन वी मेक देम द सेम समहाउ? ब्रैकेट सेम हो सकते हैं किसी तरह? सर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वो कॉमन ले लेंगे, माइनस करके कॉमन ले लेंगे. हाँ, but you don't just multiply anything with a number like that. आप खुद से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आप यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेंगे बाय. हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे. किसी भी ब्रैकेट से आप माइनस कॉमन ले लोगे बाहर. I don't know why this happens sometimes. आप किसी भी ब्रैकेट से माइनस बाहर कॉमन ले लोगे और आपका वो brackets per same हो जाएंगे. So for instance, what you can do here is q into p minus 2. If we leave it like this, the first form, दूसरे ब्रैकेट से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा? ये बाहर हमारे पास बन जाएगा -3, -3, राइट? अंदर हमारे पास आ गया p minus 2. Now these two brackets are the same, so we can say it's the same thing as saying q minus 3 into p minus 2. Because remember इस तरह करते हैं ना, q minus 3 into p minus 2 क्या मतलब है? q भी मल्टीप्लाई हो रहा है p minus 2 के साथ और -3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है p minus 2 के साथ. That's exactly what's happening here. ये हमारी factorized form बन गई है. q minus 3 into p minus 2. All right? yes. अच्छा, let's move on. Find the two solutions of this equation. अभी देखें प्लस माइनस लिखा हुआ है, यानी इसके दो केसेस बन रहे हैं. एक पॉसिबिलिटी क्या है? 5x minus 1 is equal to plus 9, and the other possibility is 5x minus 1 is equal to minus 9. इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने हैं अलग अलग से. The first one gives you 5x equal to
9 plus 1, that is 10. X is equal to 2. The other one gives you 5x equal to minus 9 plus 1, which is minus 8. X is equal to minus 8 over 5, which is minus 1.6. So you say x is either equal to 2 or it's minus 1.6. ठीक है, ये हमारे पास दो solutions इसके आगे. अच्छा, let's move on. Now the solutions of this 5x minus 1 equals plus minus 9 are also the solutions of this equation. Now this is a quadratic equation where b and c are integers. b और c integers हैं और उसने कहा है कि जो इसके solutions हैं दोनों जो ऊपर हमने निकाले हैं वो इसके भी solutions हैं. Where b and c are integers. आपने b और c की values figure out करनी है. ठीक है, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं. एक आप ये कर सकते हैं, आपको पता है वो दोनों solutions हैं, इसका मतलब ये उसमें 2 input करो, अगर इसमें 2 input करो, let's say आप x equal 2 input कर दो, तो this equation should be satisfied. अगर 2 input करें क्या आता है हमारे पास, we get 5 into 2 का square plus b into 2 plus c equals 0. That gives you 20 plus 2b plus c equals 0. यहाँ से आपको इक्वेशन आ जाती है 2b plus c equals minus 20. इसी तरह आप x equals minus 1.6 इनपुट करो, वहां से आपके पास कुछ और आएगा, minus 1.6 का स्क्वायर plus b into minus 1.6 plus c equals 0. You'll get another equation in b and c. दो simultaneous equations बनेगी, उनसे आप b और c की values figure out कर सकते हैं. Right? This is one possibility, but this is a much longer way. There's a quicker way of thinking about this. Let's talk about that. There's actually a quicker way of thinking about this as well. Let's think about that. कोई भी quadratic equation होती है जो उसके solutions होते हैं ना, for example आपको मैं कहता हूँ x minus 3 into x minus x plus 4 equals 0. इसके solutions क्या आते हैं? इसके solutions आते हैं x equals 3 and x equals minus 4. अगर आपको दो solutions पता हो, आप वापस quadratic equation के ऊपर जा सकते हो. किस तरह से? आप इसको बना लो x minus 3 equals 0 और x plus 4 equals 0. दो factors यहाँ से बन जाएंगे, x minus 3 into x plus 4 that's equal to 0. आप वापस original equation की तरफ जा सकते हो इस तरह से. तो if you know there is a quadratic equation जिसके दो solutions हैं, एक solution क्या है, x equal to 2 and the other solution is x equal to minus 1.6. What does that mean for you? minus 1.6 से आसान होगा क्योंकि इंटीजर्स है ना, उसने बताया हुआ है b और c इंटीजर्स हैं. It will be easier to use minus 8 over 5. वो यूज कर लेते हैं, that might help. minus 8 over 5. ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये हमें पता है. ओके, इसका मतलब क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से x minus 2 is equal to 0 and x plus 8 over 5 is equal to 0. ये दो फैक्टर्स होने चाहिए उसके, x minus 2 and x plus 8 over 5. Remember, we're going backwards here. हमें solutions पता है और हम वापस original equation की तरफ जा रहे हैं. So we can say कि जिस quadratic equation का solution है, that should look like this. x minus 2 multiplied by x plus 8 over 5 equal to 0. Now we can just multiply this. इनको multiply कर लें. ये देखें क्या आता है. We have x square, then x into 8 over 5, that's 8 over 5x minus 2x, and then minus 16 over 5 equal to 0. Now we simplify this further. We get x square plus 8 over 5x minus 2x. इससे क्या आएगा? Minus 2 over 5x minus 16 over 5 equal to 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके ये दोनों सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, हम बैकवर्ड्स आ रहे हैं. पहले हम फॉरवर्ड सॉल्व करते थे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, उसको सॉल्व करते हैं, एंड पे हमारे पास ये वाली फैक्टराइज फॉर्म आ जाती थी, फिर हम उससे ये करते थे, फिर हम उससे यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लेते थे. हम क्या करें, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये x equals 2 है, x equals minus 8 over 5 है, इसका मतलब क्या है, x minus 2 is equal to 0 and x plus 8 over 5 is equal to 0.
और फिर ये किन फैक्टर से आए होंगे, ये हमारे अगर दोनों फैक्टर्स होते हैं तो ये इस तरह की इक्वेशन बन रही होती, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला क्या है, उसने जो इक्वेशन दी है उसमें 5x² आ रहा था, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास x² आ रहा है। नाउ टू मेक दिस इक्विवेलेंट हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड्स पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा 5x² माइनस 2x माइनस 16 इक्वल्स 0। जो उसने इक्वेशन आपको दी हुई थी दैट वाज 5x² plus bx plus c equals 0, and that means your b is equal to minus 2 when you compare these two, and c is equal to minus 16. So b की वैल्यू क्या होनी चाहिए -2 और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए -16। ऑलराइट, आपके पास -2 और -16 वहां से दो इक्वेशंस आ गए। ऑलराइट, अच्छा, now let me repeat what we've done here. देखिए, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, we have x² plus 7x plus 12 equals 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है, we get x² plus 4x plus 3x plus 12 equals 0, and that gives us x into x plus 4 plus 3 into x plus 4 equals 0. That gives us x plus 3 into x plus 4 equals 0. That gives us x plus 3, either x plus 3 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. That gives us x equal to -3 and x equal to -4. ये हम इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं यूजिंग मिड टर्म ब्रेकिंग। व्हाट वी डूइंग इन दिस केस इज, जो लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन था हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमें फाइनल रिजल्ट पता है, वी नो दिस थिंग, वी नो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसने दी हुई थी, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं x equal 2 and x equals -8/5। तो ऊपर सॉल्यूशंस दिए हुए थे वो उसके इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो वी गो बैकवर्ड्स, हमारे पास ये सॉल्यूशन अगर हो हम इसको इस तरह लिख देंगे, x equal -3 था, x equal -4 था, उसको हमने लिख दिया x plus 3 equal to 0, x plus 4 equal to 0। That's exactly what we do here. We're saying x equal 2, x equals -8/5, that's the same thing as saying x minus 2 equal to 0 है, x plus 8/5 equal to 0 है। ओके, अच्छा, ये इस स्टेप पे आ गए। अच्छा, इससे पिछला स्टेप क्या था फिर, कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, फैक्टर्स x plus 3 and x plus 4, वो दोनों मल्टीप्लाई होके they should be equal to 0। That's exactly what we're doing here। ये दोनों अगर इस तरह से आगे, इससे अगला पिछला स्टेप क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इनको and we get equal to 0। इस तरह से हम बैकवर्ड्स जाके ओरिजिनल इक्वेशन में पहुंच सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, x plus 3 into x plus 4 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आपको ये मिल जाएगा और उससे आपको वापस ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग बैकवर्ड्स हियर, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, वी गॉट दिस, वी सिंप्लीफाइड दैट, वी गॉट दिस फॉर्म, ठीक है। अब जो उसने हमें फॉर्म दी हुई थी उसमें 5x² आ रहा था, हमारे पास x² आ रहा है, to be able to compare those two, हम पूरी इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन है ना, एक साइड पे 0 है, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट साइड पे तो 5 into 0 that will remain 0, और लेफ्ट साइड पे हमारी फ्रैक्शन खत्म हो गई, ये वाली फ्रैक्शन थी, ये वाली फ्रैक्शन थी, and we get 5x² minus 2x minus 16। This is what we end up with। इसको हम कंपेयर करते हैं जो उसने दिया हुआ था, उसने हमें दिया हुआ था 5x² plus bx plus c, x का कोएफिशिएंट b है, हमारे पास x कोएफिशिएंट -2 आ रहा है, so that's our b, कांस्टेंट जो है हमारा -16 आ रहा है, उसका c था, तो c is equal to -16, that's where we get the value of c from। Does this make sense? It's a very important concept। ये और भी different जगहों पे आप देखोगे past papers के अंदर it's tested कि आपको अगर solutions पता हो, how can you go back to the original equation? Is this okay? Yes, sir. Good. All right.
Acha, let's look at this. Complete the table of values for this equation. That's y equals x over 20 into x square minus 20. ये cubic equation है, x square और ये x. Cubic equation उसका graph अपने draw करना है. First have to complete the table. X equals 5 के ऊपर आप देख लें क्या वैल्यू आती है. 5 इसके अंदर इनपुट करें. So we get 5 over 20 into 25 minus 10. That's 15. 15 into 5 is 75. 20. That should be 3.75. 3.75 आता है? Somebody confirm? Yes. Yes, sir. So this is 3.75. ठीक है, हमने वो value find कर ली. Then it says using a scale of 2 centimeter to 1 unit on both axes. 2 centimeter to 1 unit. I remember मैंने आपको क्या बताया था? आपके जो कैम्ब्रिज एग्जाम में जो पेपर होता है, ये जो पूरा एक बड़ा बॉक्स होता है, this is 2 centimeters. 10 small boxes is 2 centimeters. 5 small boxes, this is 1 centimeter. ठीक है? आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे वो कह रहा है आपने दोनों एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट यूज करना है 2 centimeters. So you have 0, 1, 2, 3, and 4 here, and minus 1 here, but 1 here, 2 here, 3, 4, and 5. अच्छा, उन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 5. इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम. 0, 0, 0 के ऊपर 0 है. Got this point here. You've got 1 and minus 0.45. That will be, so this is 0.5, this is minus 0.45. This is minus 0.45. Minus 0.6 on 2, that's going to be here. Minus 0.15, minus 3 by minus 0.15, that's right here. First to second box के दरमियान में 1.2, 4 के ऊपर 1.2, that's right here. And 5 by 3.75, that is right here. ठीक है, ये आपने points plot कर दिया सारे. Now what you have to do is you have to draw this graph. ठीक है, graph draw करना है. So again, that's going to give need a few iterations to make sure that you use a pencil for this. The graph shape सही बने. In case you need to erase anything at any point, आप pencil use कर रहे हो. You have to make sure that it passes through the points. So it doesn't for me right now. So I just want to be a bit careful. Okay. Let me try that. Okay, so that's our graph, right? So roughly, it looks okay-ish. You may need to smooth it a bit from this point. And this is what we have. Okay, so this is the graph that you have to plot. You plot kar diya, that earns you 2 marks. Okay, graphs are questions. Yes, we know they are slightly difficult. They're relatively difficult. लेकिन इसके जो फर्स्ट 3-4 मार्क्स होते हैं या 5 मार्क्स भी आपके लिए काफी आसान होते हैं. आपको बस क्या करना है, टेबल फिल करना है, आप ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है, टेंजेंट ड्रॉ करके. ये तो सब हर कोई कर सकता है, राइट? एंड वाले कुछ मार्क्स होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट ये वाले पार्ट्स तो आपको सबको करने चाहिए और इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए. In part C, it says by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at the point where x is equal to 2.5. 2.5 आप देखें कहाँ पर आ रहा है. This is 2.5. यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है at this point. ठीक है,
और उसको यूज करके आपने कर्व ग्रेडियंट फाइंड करना है। So let's draw that tangent. So again, it should only touch the graph at that one single point. आप कोशिश करें कि आपकी पेंसिल जो है वो sharp हो when you're drawing this. This is what the tangent might look like. ठीक है ना, वो क्या बताया था आपने, पॉइंट के दोनों साइड्स पे कोई भी पॉइंट के दोनों साइड्स पे जो टेंजेंट और कर्व के दरम्यान में गैप है ना, वो रफली सेम होना चाहिए। ठीक है, जो गैप है कर्व और लाइन के दरम्यान में दोनों साइड के ऊपर, दैट शुड बी रफली द सेम। सो यहाँ पे मेरे पास ये टेंजेंट बन गया। आई टेक एनी 2 पॉइंट्स इन दिस। लेट्स टेक दिस पॉइंट हियर। एक साइड पे पॉइंट लेना है, दूसरी साइड पे लेना है, एंड ट्राई टू टेक द पॉइंट्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बहुत करीब नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। दैट विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी। अगर आप दूर दूर पॉइंट्स लेंगे, सो एक मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, सो दैट्स 5 and 0.5, and point the other side, let's say I use this point here, जो clearly आपसे readable हो आपके लिए, वो use कर लें। So this is one, जिस point से specifically pass कर रहा हूँ, right? इस तरह का point लें जो एक ऊपर एक corner पे pass कर रहा है। This is 1.3 and minus 0.9. ठीक है, I've got 2 points. मैं gradient वाला formula apply कर दूंगा, y2 minus y1 or x2 minus x1. So let's call any of these x1, y1. So this is x1, y1. This is x2 and y2. So I say y2 minus y1. So that's minus 0.9 minus 0.5 divided by 1.3 minus 5. ठीक है, इसको evaluate कर लें। मेरे पास क्या आ रहा है? This is going to be minus 1.4 divided by 3.7 minus 3.7. ठीक है, देख लें क्या आता है। Tell me what this is. So I'm getting 0.38. So something around that point, that range 0.38. That is the gradient that I get from this. Okay, 0.38. Okay, I'm just looking at the marking scheme. I think I was 0.3 or 0.5 के दरम्यान में कोई भी value, that's acceptable. So this is between that range, and that's acceptable. Of course, you should try it on your own graph. अपने graph के ऊपर आपने देखना है आपका जो tangent बन रहा है उससे क्या gradient आता है। 0.3 से लेकर 0.5 जो है, that is the acceptable range in this particular case. Okay, आपने tangent draw करके gradient find कर लिया. Now it says use your graph to solve this equation for x between 0 and 5. इस equation को आपने solve करना है using your graph. Okay? अच्छा, अभी आपको 2 मेथड्स बताए थे इसके अंदर, है ना? एक मेथड क्या था जो relatively simple है। एक मिनट Abdullah, you have a question? No, sir. Okay. वो y को 0 था ना, तो वो horizontal axis पे हम देखते हैं तो कहाँ वो rotate कर रहा है। Yes, very good. So the first method is, and that's going to be easier. अगर आप उस तरह से उसको देख सकते हो हमेशा, तो ये तो काफी आसान वाला है ये वाला part, but sometimes it gets relatively trickier. उसमें पे 2 methods आप apply कर सकते हो, but let's start with the first one. आपने सबसे पहले देखा हमने curve कौन सी draw की है। आपने curve जो draw की होगी उसकी equation आपके पास हमेशा होगी। So in this case that is x over 20 into x square minus 10. That is the equation of the curve that you have drawn. Okay? अब वो आपसे क्या कह रहा है, आपको ये equation solve करनी है, x over 20 into x square minus 10 equals 0. आपको करना क्या होता है, एक साइड के ऊपर आपको ये चीज चाहिए। We already have that here. उसने equation solve करने का कहा है, हमारे पास already उसके अंदर एक साइड पे वो फॉर्म आ रही है। This thing is y, right? This thing is y. y is equal to 0. Essentially आपने क्या करना है, अपनी कर्व के ऊपर देखना है, अपने ग्राफ के ऊपर देखना है कहाँ पे y equal to 0 है, right? आप जाके क्या करो, y equal to 0 लाइन ड्रॉ कर लो अगर आप करना चाहते हो। That's just the x axis, right?
that's the line y equal to 0. That's already drawn there. ये line y equal to 0. आपने ग्राफ को देखोगे कब जो है कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए y 0 है. एक तो ये ओरिजिन है वो तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है. So that's one possible value. So x is either equal to 0 or the other possibility is this point here. That is 3.1. So that is the other result. That's 3.1. So x is either equal to 0 or it is 3.1. Okay? Is this clear? That was pretty straightforward. अच्छा अभी दूसरा वाला क्या है? अच्छा next part में क्या कहता है? The graph of this जो हमने ग्राफ ऊपर ड्रॉ किया था, let's write that down here again. Y equals x over 20 into x square minus 10 together with the graph of a straight line L with some other line can be used to solve this equation. X cube plus 10x minus 80. Okay, अभी दूसरी equation क्या है? X cube plus 10x minus 80 equals 0. वो आपकी कर्व है और ये आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है. अब पहला तरीका हमने क्या सीखा हुआ है कि आप किसी तरह से इस इक्वेशन के एक साइड के ऊपर वो कर्व ले आओ जो ऊपर वाली कर्व है, वो किसी तरह से यहाँ पर आ जाए, राइट? If you can do that, that should be much quicker, but it's going to be relatively trickier in this case. थोड़ा सा मुश्किल है इसको उस फॉर्म में लेकर जाना. Let's try that and then I'll tell you the other method. जो आपको अगर इस तरह से नहीं समझ आता जल्दी से, फिर आप दूसरा मेथड जो है वो भी अप्लाई कर सकते हो. I'll show that to you as well. इसको आपने ऊपर वाली फॉर्म बनाना है. अब इसको समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ऊपर वाली कर्व को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. That's actually x cube minus x cube over 20. उनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर. That's x cube over 20 minus 10 into x divided by 20. ठीक है, or you can say x over 2. That's the same thing. इसको भी कैंसिल करते हैं. What do we get? We get x cube over 20 minus x over 2. ये हमारे पास ओरिजिनल कर्व है. हमें इस इक्वेशन के एक साइड के ऊपर वो चीज चाहिए किसी तरह से. ये हमारे पास ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन. ठीक है, that's y equal to this thing. अच्छा, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करें उस फॉर्म के अंदर. Let's think about this. अच्छा, एक तो वहां पे देखें x क्यूब ओवर 20 आ रहा है. ठीक है, हमें इस पूरे इक्वेशन को 20 से डिवाइड करना चाहिए ताकि x क्यूब ओवर 20 तो हो जाए हमारे पास. ठीक है, सबसे पहला काम वो करते हैं, इसको हम करते हैं पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देते हैं. x क्यूब ओवर 20 प्लस 10x ओवर 20 क्या बन जाएगा? x over 2 minus 80 over 20 that will become 4. That's equal to 0. इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? We are dividing the whole equation by 20. That's what we're doing here. ठीक है, ये हो गया. अब x क्यूब तो हमारे पास आ गया वो वाला. x क्यूब ओवर 20 तो आ गया. अब प्रॉब्लम क्या रहेगी? माइनस x ओवर 2. हमारी उस कर्व के अंदर माइनस x ओवर 2 आ रहा था. जो उसने इक्वेशन दी है उसमें क्या आ रहा है? उसमें प्लस x ओवर 2 आ रहा है. How do we make sense of that? अपने उसको उसके प्लस x ओवर 2 को माइनस x ओवर 2 में कैसे लेकर जाए? तो लेट मी राइट दैट हियर. हमारे पास वहां पे क्या था? हमारे पास है x क्यूब ओवर 20 माइनस x ओवर 2. ठीक है, कांस्टेंट कोई भी नहीं है यहाँ पे. कांस्टेंट हमारे पास नीचे तो कोई भी नहीं है. ये हमारी ऊपर वाली कर्व थी. अब हम क्या करें इसके अंदर? x ओवर 2 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? माइनस x ओवर 2 में लेके जाना है. क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें माइनस x करना पड़ेगा. माइनस x करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी. x ओवर 2 में से x माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस x ओवर 2 आ जाएगा. ठीक है, so that's one thing that we have to do there. एक हमें क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस x करना पड़ेगा दोनों साइड्स के ऊपर. हम एक काम वो करते हैं, we subtract x from both sides. ठीक है, अच्छा और क्या करना पड़ेगा? ऊपर -4 है, नीचे क्या है?
नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे तो कोई कांस्टेंट नहीं है। -4 को 0 पे लेके जाना है, क्या करना पड़ेगा, +4 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, ऊपर +4 कर देते हैं। We have +4 here and we've got +4 here. So we add 4 on both sides there. ठीक है, अभी हमारे पास बन जाएगी x³/20 plus x/2 minus x, that gives us -x/2 -4 plus 4, that gives us 0, that gives us 0. Oh, so that gives us 0. On the other side we have minus x plus 4. So basically the straight line हमें चाहिए, that's this, y equal to minus x plus 4. That is the straight line that we have to draw there. तो फिर हम उसके पॉइंट्स लेंगे। अब वो तो अभी तो उसने इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा था, अभी तो सिर्फ उसने इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा था। अभी नेक्स्ट उसमें पार्ट के अंदर वो आपको ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं, उसमें आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ दिस आई अंडरस्टैंड इज was fairly tricky. It was very tricky to do this, especially for the reason, Manahil, what you are suggesting would not work in this case because of the problem here कि x³/20 है हमारे पास और यहाँ पे सिर्फ x³ है, तो आपको 20 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो जो आप कह रहे हो। बट इस तरह के केसेस के अंदर where it is difficult to figure out कि आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे लेफ्ट साइड को उस फॉर्म के अंदर, the other method is going to be easier to work with, it's going to be easier to apply. Now what is that other method? आप ये assume कर लोगे straight line को, equation को, that this is y equal to mx plus c. You assume this कि ये y को, straight line की equation ये होती है ना, y equal to mx plus c फॉर्म की होती है हमेशा। तो instead of thinking about all of this, ये सारा जो है it's easier for some people and some people find it much more difficult. अगर आपको intuitively उस तरह की जो है वो सोचने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो it's much better that you use this and that will give you the result. आप क्या कह रहे हो, ये आपकी कर्व है, ये आपकी लाइन है, इनको जब आप सॉल्व करते हो आपके पास ये फॉर्म आ जाती है, राइट? आपने क्या करना है, उसका mx plus c assume कर लेना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। So you have x/20 into x square minus 10, that's equal to mx plus c. क्या मतलब, इन दोनों ग्राफ्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही आपकी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। आपने इन दोनों को इक्वेट करना है, स्ट्रेट लाइन आपको नहीं पता, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आपने एज्यूम कर लेना है, दैट इज y equals mx plus c. वो आपने assume कर लिया, now either y is equal to this or y is equal to this, आपने उन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और उस इक्वेशन से कंपेयर कर लोगे। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। उस इक्वेशन के अंदर आपके पास कोई फ्रैक्शन नहीं है ना, अब इसे फ्रैक्शन खत्म कर दो, 20 को मल्टीप्लाई कर दो, उधर यहाँ पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, x³ minus 10x, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, that gives us 20mx plus 20c. Let's take everything to the left side. We have x³ minus 10x minus 20mx minus 20c, that's equal to 0. अब यहाँ पे देखें x का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। We have x³ minus 10 plus 20m times x, यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, दोनों में x आ रहा था, x को कॉमन ले लिया। What is the coefficient of x then? That's this whole thing, minus into 10 plus 20m minus 20c is equal to 0. ये हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, हम उसको कंपेयर कर लेंगे जो उसने इक्वेशन दी हुई थी उसके साथ। So that was plus 10x minus 80 equals 0. That means
जो उसके पास x का कोएफिशिएंट था और जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है वो एक होने चाहिए, बिकॉज जो हम भी वही चीज कर रहे हैं जो उसने की हुई है। x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा उसके उससे -10 -20m, या फिर माइनस इंटू 10 प्लस 20m दैट्स इक्वल टू 10। यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक पास आता है -10, नीचे करना पड़ेगा, उधर कर लेते हैं, -10 -20m दैट्स इक्वल टू 10, और यहाँ से बस m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इवैल्यूएट करके देखें क्या आता है। m की वैल्यू आपके पास आएगी -20, इधर आएगा डिवाइड बाय 20, m की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। इसी तरह से कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लें, -20 से ऊपर है, 80 नीचे है, तो ये गेट कांस्टेंट को कंपेयर करें उससे क्या आता है, गेट -20c इक्वल टू -80, c की वैल्यू आ जाती है 4। सो योर स्ट्रेट लाइंस इक्वेशन देयरफॉर इज y इक्वल्स mx प्लस c। m की जगह -1 डाल दिया, -x आ गया, c की जगह 4 डाल दिया, ये +4 आ गया। You have -x plus 4. This process involves much less thinking. It's fairly standard. बस आपने इक्वेशन को assume कर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को assume कर लिया, mx plus c, उनको इक्वेट कर दिया, and you get this. All right? Is this clear? Okay, good. Now it says draw this graph on the grid. या आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना ग्रिड के ऊपर, ठीक है, -x plus 4 ग्राफ ड्रॉ कर लें उसके ऊपर। what do you need for a straight line graph? Any 2 points, right? कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, बस जस्ट मेक श्योर कि आपके ग्रिड के ऊपर आ रहे हो, पूरे ग्रिड से बाहर ना चले जाएं। लेट्स से अगर 0 ले हम, तो y की वैल्यू क्या आती है, if x is 0, y is 4. Can we draw that on the grid? 0 and 4, yes we can. Let's take another value. अगर हम y को 0 कर लें, x की वैल्यू क्या होगी, x will be 4. So 4 0, yes, that can also be on the graph. So we plot those 2 points, 0 4 and 4 0. इनको हम ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। Let's draw this straight line. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा शार्प बनाएंगे इससे, like this. So that's our straight line. ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, हमने ड्रॉ तो कर दी, hence solve this equation. hence का मतलब है आपको पिछले पार्ट को यूज करना है। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसका, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, इसको आपने कैलकुलेशन से नहीं सॉल्व करना। मैंने आपको hence कहा है, यानी आपने पिछले पार्ट को यूज करना है। आपने जब ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, the point of intersection of that graph are going to give you the solution for this. ठीक है, हम जाएंगे ऊपर, हम उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन को देखेंगे, that was y equals -x plus 4, उसकी कर्व के साथ इंटरसेक्शन कहां पर हो रही है, that's this point here. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, it's around 3.5, 3.5 भी कह सकते हैं, 3.5 थोड़ा सा ऊपर है, 3.55 कह लें उसको। So that's your point, x equal to 3.55, and that is the solution to that, to this equation that we had there. All right, x equals 3.55. Is this clear? Any questions on this? इसका ये E part जो था, that was fairly tricky. E का 1, that was fairly tricky. Yes. So this is the method that you can use for such questions, जहाँ पे आप एक साइड को आराम से convert नहीं कर सकते उस फॉर्म के अंदर। आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को assume कर लेना है, y equals mx plus c, और उसको इक्वेट कर देना है आप अपनी कर्व के साथ। आपकी कर्व थी, कर्व और उसको इक्वेट करना है, और उसको कंपेयर कर लेना है जो उसने दिया होगा वहाँ पे, जो उसने इक्वेशन दी होगी उससे कंपेयर कर लेंगे, and we will get the values of those coefficients. Okay, very good. Let's move on. Question number 4. In the framework ABCD, BD is equal to 3 meters, and we have some angles given.
कुछ राइट एंगल्स दिए हुए हैं, फाइंड AD, AD फिगर आउट करना है, AD दिस लेंथ हियर, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रिमेंबर वी प्रेफर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. सो क्या रेशियो यूज कर सकते हैं, वी हैव दिस एंगल, हाइपोटेन्यूज है और आपको AD फाइंड करना है, दैट्स द बेस. बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशियो होती है, cos, so cos of 27 is equal to AD base over hypotenuse, that's 3, यहाँ से आपके पास AD आ जाएगा, right? 3 into cos of 27, what do we get? 3 into cos of 27, that's 2.67, that's 2.67 meters, right? It's fairly straightforward. Let's move on, find CD. CD figure out करना है आपको. Let's look for that. CD, that's this length here, ये वाली length. ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ रही है ना, CBD ट्रायंगल के अंदर है. इसके अंदर CBD के अंदर आपको एक ही लेंथ पता है 3, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए दैट्स द हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट ट्रायंगल. CBD ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड. सो नाउ यू हैव द हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट साइड, दैट्स योर परपेंडिकुलर. नाउ ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर ये जो 3 है, दैट्स योर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशियो होती है, साइन. So we say sine of that angle, that's 41 degrees, is equal to perpendicular over hypotenuse, that's 3 over CD, that's 3 over CD. So CD क्या हो जाएगा, 3 over sine of 41. यहाँ से आपके पास CD की वैल्यू है, ठीक है. See what that is, that turns out to be 4.57 for me. ठीक है. Any problems with this? ये तो काफी क्लियर था, है ना? Okay, let's move on. In triangle PQR, PQ is equal to 3 meters. PQR, अच्छा ऊपर तो नहीं है. In triangle PQR, इसका कोई और triangle है. PQR, PQ is 3 meters. Let's just draw that triangle here. PQ हमारे पास है 3 meters. QR is 5 meters. So let's say something like this. This is 5, and the area of triangle is given, that is 6. Okay. PQ and QR, so that means अगर ये P है, ये Q होएगा, ये R होएगा, and we are given the area of the triangle. अच्छा, अब area of triangle और sides के दरमियान में क्या relationship हो सकता है? We have two formulas. We have area equal to half into base into height. एक तो वो हो सकता है, लेकिन आपने हाइट नहीं पता हमें. उसने पूछा कि आपसे PQR एंगल, ये वाला एंगल उसने पूछा है. तो अगर ये एंगल आपसे पूछा है, दिस इज द एंगल दैट इज बिटवीन those two sides, that should remind you of that formula. It's half AB sin C. You've got two sides and you're dealing with the angle between them. अच्छा, so area is equal to 6. आप क्या कह सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू AB sin C. So half into 5 into 3 into the sine of the angle between them. The angle between them is theta. That's equal to 6. यहाँ से आपको थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है. टू पॉसिबल वैल्यूज. उसकी रीजन ये है कि हो सकता है आपकी ट्रायंगल इस तरह होती एक्यूट. दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी आपकी ट्रायंगल कुछ इस तरह होती ऑब्ट्यूज, राइट. ये एंगल 3 है, ये साइड 3 है, ये साइड 5 है, आपको ये एंगल चाहिए होता. ये तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी. साइन के केस में आपके पास अक्सर आता है, क्योंकि यू नो दैट साइन of theta is equal to sine of 180 minus theta. So जो साइन के एक acute angle की वैल्यू होती है, acute angle के साइन की वैल्यू होती है, वही corresponding obtuse angle की भी वैल्यू होती है. वो दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के. So we will use that concept. इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. हमारे पास यहाँ से आएगा sin theta equal to 12 over 15, which is 4 over 5. इसको हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, हमारे पास थीटा की एक वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स ऑफ 0.8.
थीटा की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? साइन इनवर्स ऑफ 0.8, व्हाट डू वी गेट? 53.1 डिग्री। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई थीटा की, ठीक है। ये तो एक्यूट वाले केस के अंदर आ गई, दैट इज 53.1 डिग्री। ये हमारे पास एक्यूट वाले केस के अंदर एक पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हमने कहा है किसी भी एक्यूट एंगल का जो साइन होता है दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ द corresponding obtuse angle. इसका जो corresponding obtuse angle होगा वो क्या होएगा? It's going to be 180 minus 53.1. See what you get from that. You get 126.9. So दूसरा possible angle जो हमारे पास यहाँ पे हो सकता है that is 126.9. और उसका logically मतलब क्या है कि ये एक तो पॉसिबिलिटी ये जो हमने एक्यूट ट्रायंगल ऊपर बनाई है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि ये ट्रायंगल असल में इस तरह की होती, something like this. My drawing skills are not very great, but something like this. This is 3 and this is 5, and the angle between them could have been 126.9 degrees. All right, this could be the other possibility. लेकिन आज जब evaluate करोगे उसने कहा है 2 possible values of the angle. जब sin theta आपके पास आ गया है 4/5, एक तो आपके पास acute angle आया होगा, आप दूसरा angle उसी का obtuse corresponding angle निकाल के उसको बता दोगे. That is the other possibility. All right, is this clear? Any issues with this? Okay, good. Let's move on. So now we have this circles question. We have two circles which are often complicated. Let's look at this. In the diagram, A and B are centers of two circles that touch at P. So this is the point P where these two circles touch each other. The line ACT touches the smaller circle. Okay, so you have the figure given, and it's just explaining that figure. We've got the angle CDA, D is the point of AB, such that that angle is 90 degrees. Complete the following to show that ACD is similar to angle ABD. Similar show करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको angles equal show करने होते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले वो क्या कहता है? ACD is similar to ABD. ACD is equal to similar to ABD. ये दो triangles हैं, ACD and ABD. अच्छा, यहाँ पे ना आपने उसके ऑर्डर को भी कभी ध्यान रखना होता है कि A पहले लिखा हुआ है ना इसने यहाँ पे, इसका मतलब है इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये A एंगल है. सो A तो आपका कॉमन एंगल बन रहा है दोनों के अंदर, वही एंगल सेम दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है. अब ये C जो एंगल है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल B हियर, वो B को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो C वाला एंगल ACD का जो C पे एंगल है वो ABT के अंदर इस वाले एंगल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है. इसी तरह से जो D एंगल है वो T को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है. तो D पे एंगल ये है तो T पे एंगल ये भी 90 होना चाहिए. जो ऑर्डर मैटर करता है, जो पहले लिखा हुआ है वो पहले वाले को कॉरेस्पॉन्ड करता है, जो दरम्यान में लिखा है वो दरम्यान में कॉरेस्पॉन्ड करता है, जो एंड पे वो लास्ट को कॉरेस्पॉन्ड करता है. So now it says complete this information. So angle DAC is equal to what angle? Such that it's the same angle. Same angle कौन सा है? DAC लिखा हुआ है उसने. आप सिर्फ इनको देख के ना यहीं से भी कर सकते हो. तो पहले कौन सा लिखा हुआ है? D सबसे पहले लिखा है, राइट. D सबसे पहले लिखा है, आप भी सबसे पहले लिखोगे D, ठीक है, लास्ट वाले लेटर. अच्छा, A is the first letter. आपके पास फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? A. दूसरे में भी got A here. C is the middle letter. आपके पास मिडिल लेटर दूसरे ट्रायंगल में क्या है? B. You say that's B. That's the angle TAB. A के ऊपर जो एंगल बन रहा है TAB, that is the middle. That is the angle. That's the same in both triangles.
ठीक है. Then it says CDA is equal to what angle? CDA. Again, C middle वाला letter है, दूसरी में middle वाला letter क्या आएगा? B. Then D is the last letter here. आपके पास last letter क्या है दूसरी triangle के अंदर? T. That's B. A and then उसमें भी A आ रहा है, so that's BDA. यानी D angle T angle के equal है. Now why is that? इसमें reason क्या होगी? We know that this angle should be 90. Why? Because this is the radius, BD is the radius, and AT is the tangent. So we can give that reason. We can say radius is perpendicular to the tangent. इसका words में लिख सकते हो, इस तरह abbreviation में भी लिख सकते हो. You can say the radius is perpendicular to the tangent. Okay, so that is the reason that you give it. तो उसके बाद लास्ट क्या है? एंगल ACD. तीसरा एंगल क्या होगा? ACD. उसी ऑर्डर के अंदर आप लिख दोगे एंगल ABT. अगर दो एंगल सेम हो तो तीसरा एंगल भी सेम होना चाहिए, बिकॉज सम जो है वो 180 होता है. अगर दो एंगल सेम आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है. Now, since all the three pairs of the angles are equal, the triangles are similar. That's our complete proof. Is this clear? Okay, then it says, yeah. So then it says, given that the radii of the circles are 7 centimeters and 3 centimeters, calculate CD. CD calculate करना है हमें. Radii उसने दिया है 7 for the bigger circle, 3 for the smaller circle. अच्छा, यानी कि AC हमारे पास आ गया 7 AC. 3 centimeter for the smaller circle, यानी कि BD ये कितना होएगा? 3 होएगा, और BT भी 3 होएगा, ये भी 3 होगा. हम क्या कह रहे हैं? वो कैलकुलेट CD फाइंड करना. So this length here, CD. How do you figure this out? Let's think about this now. Yes. Okay, so we have proved in the first part that these two triangles are similar. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी रेशियो जो है वो इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी बनती है हमारे पास? ये जो ट्रायंगल्स हैं इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? We basically have AC and AB. AC, yes, AC over AB. Over AB. Is AD equal over to AD. AD over over AD. Very good. AD. CD over B. And CD over BT. ठीक है, उसी ऑर्डर के अंदर ये पहला दोनों कर लें, AC AB. फिर आप क्या कर लें? CD BT. ठीक है, फिर आप क्या कर लें? फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट. ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको CD चाहिए. CD तो यहाँ पर आ रहा है. एक आपको ये चाहिए, बाकी दोनों में से कोई भी देख ले जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. AC और AB है, AC है, AB आ सकता है किसी तरह से, AB आ सकता है. कैसे आ सकता है? We know that the smaller radius is 3 और ये बड़ा वाला रेडियस कितना था? AP length is 7. तो AB हमारे पास आ गया टोटल 10. 7 plus 3, दोनों रेडियाई को मिलाया हमने, उनको ऐड किया, टोटल 10 आ गया. So we can use these two. ये दोनों रेशियोज यूज कर लेते हैं. AC की वैल्यू क्या है? 7. AB is 10. AC is 7, AB is 10, right? CD हमें नहीं पता. BT क्या है? BT is 3.
we can evaluate CD from there. यहाँ से हमारे पास CD आ जाएगा, which is 21/10. That's 2.1 centimeters. Okay. Is this clear? Any issues with this? Okay, good. Let's do the last one for today. That's question number 6. That's a relatively simpler one. We have these matrices. A is equal to 2, 0, 3, 1. B is equal to this. Find A plus 2B. Okay, so let's do that. 2, 0, 3, 1 plus 1 minus 1, 2, 3. और ये 2 से multiply हुआ हुआ. ठीक है? What does that give us? 2, 0, 3, 1 plus 2 minus 2, 4 and 6. हर term से multiply हो गया. इनको add कर देंगे. You'll get 4. 0 plus 4 is also 4. 3 minus 2 is 1. And 1 plus 6 is 7. So that's your matrix. Okay. 4, 4, 1, 7. So find AB. AB को multiply करना है. That's 2, 3, 0, 1 multiplied by 1 minus 1, 2 and 3. What does that give us? इनको multiply करते हैं. देखिए 2 by 2 है ना दोनों 2 by 2 matrices हैं. ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है. तो रिजल्ट रिमेंबर मैं क्या कहा था, पहला और आखिरी या कोई आउटपुट होनी चाहिए. 2 by 2 ही आउटपुट आएगी आपके पास. 2 by 2 ही आउटपुट आएगी. सो हम देखते हैं क्या आता है. So 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, that's 2. 0 into minus 1, that's 0. 2 plus 0. उसके बाद 2 0 और 2 3 इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 2, that is 4. Remember tail को tail से करना है, head को head से करना है. इस tail को इस tail के साथ, इस head को इस head के साथ. ठीक है. We get 4 plus 0. तो नीचे आते हैं. 1 3 को 1 से किया, we get 3. 1 को minus 1 से किया, we get minus 1. So then 3 and this 2, that is 6. Why does this happen? 3 and 3 into 2, that's 6. And then 1 and 3, that is 3. ठीक है, इसको आप evaluate करके लिख देंगे. You get 2, 4, 2 and 9. That's your matrix. ठीक है. और उसके बाद आपको ये सॉल्व करने का कहता है find x and y in this. आप क्या करोगे, a को मल्टीप्लाई कर दो. a जो मल्टीप्लाई हो रहा है, a मैट्रिक्स आपका ऊपर. a मैट्रिक्स क्या था, 2 0 3 1. That's 2 0 3 1 into x2. That's equal to 8 2y. लेफ्ट वाली साइड को मल्टीप्लाई कर दो. Now again remember हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए. This is 2 by 2. दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 2 rows and 1 column. रिजल्ट क्या आएगा, 2 rows and 1 column. इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास. 2 rows and 1 column. ठीक है. अच्छा, 2x plus 0, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ. Then 3x plus 2. 3x plus 1 into 2, that's 2. That's equal to 8 and 2y. दो इक्वेशंस आ गई. 2x equals 8 और दूसरी आ गई हमारे पास 3x plus 2 equals 2y. तो सॉल्व कर लेंगे. पहले से हमारे पास आ गया x equal to 4. x की वैल्यू 4 आ गई. x की वैल्यू 4 दूसरे में इनपुट करेंगे. 3 into 4 plus 2 equals 2y. That will give us 14 equals 2y. y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7. So y is equal to 7 there. Okay, so multiply करके तो दोनों साइड्स को इक्वेट कर दिया and you get this. So then it says find b inverse. b का inverse find करना है. So what's the matrix b? That's 1 2 minus 1 3. 1 2 minus 1 3. That's the matrix b.
इसका इनवर्स निकालना। ठीक है, इनवर्स क्या होता था? 1 over determinant of that matrix, determinant of B into adjoint of B, and that will give you the inverse. अच्छा, इसका determinant क्या आएगा? Let's find that. Determinant of B, that's this diagonal, 1 into 3 minus 2 into minus 1. That gives us 3 plus 2, which is 5. So एक हमारे पास इनवर्स वहां पे क्या आ गया? 1/5 आना चाहिए बाहर। तो फिर अंदर एडजॉइंट में क्या करते हैं? इस डायगोनल पे इंटरचेंज कर देते हैं। So that's 3 and 1, दूसरे डायगोनल के ऊपर साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 की जगह -2 हो जाएगा, उधर नीचे 1 -1 की जगह 1 हो जाएगा। That's your inverse। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। That's your choice। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख दो, 1/5 बाहर रहने दो, and you have 3 minus 2, 1 and 1. That is your inverse. Okay. Any issues with this? Is this clear? Yes, sir. Okay, so we got a couple of difficult questions there, but the rest was relatively straightforward. So we will continue with this paper on Monday now, inshallah. Now, we will have regular classes Monday to Saturday, inshallah, and most likely next Sunday ko bhi class hoegi, and we will try to keep it at a standard time every day, regular time, and that's going to be 3 p.m. inshallah. So does 3 p.m. suit everyone? 3 p.m. सबको suit करता है? Sir, Yeah. और क्या हो सकता है टाइम? Sorry? और कोई है possibilities टाइम की? टाइम की क्लास आ रहा है कोई? possibilities है तो वो बताइए। Yes. क्लास किसके साथ है? Like मतलब half an hour का। Sorry? तो English class। English क्लास आपको 6 बजे नहीं होती? क्लास है तो No sir, but Saturday Sunday वो उतना मुझे होती है to Saturday Sunday कब होती है? Saturday Sunday होती है 1:30 to about 3 तक चलती है, 3 or 3:30 तक। ठीक है, Saturday Sunday को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। Let's keep it 3 for all the other days. ठीक है सर। ठीक है, Monday to Friday 3 p.m. रखते हैं, because Monday to Friday मेरी फिर बाद में उसके बाद एक और भी क्लास है, तो लेकिन Saturday Sunday को I can change, I can delay it a bit. I can make it 4 p.m. maybe. Okay. ठीक है? Okay, so let's do 3 p.m. then. Of course, कभी-कभी होगा कि वो थोड़ा change करना पड़ेगा, but let's keep it standard now for every day. Yes. बाकी commitments थोड़ी सी कम है इस month के अंदर, तो I can keep it one single time for the rest of the weeks that we have. So yeah, let's do that. So Monday को we will what we will do is Monday को हम इसी पेपर को finish करेंगे, और फिर जो नून वाली क्लास है ना, जो हमने कोई टॉपिक डिस्कस करना होता है, वो हम मोस्ट लाइकली उसको ट्यूसडे को करेंगे। ठीक है, दैट विल मोस्ट लाइकली बी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मंडे वाली क्लास जूम पे ही होगी, नून वाली क्लास का आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। ओके, सो आई विल इन्फॉर्म यू कब नून पे और कब जूम पे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसी पेपर को कंप्लीट करेंगे, और फिर टॉपिक जो नेक्स्ट हम डिस्कस करना है वो हम ट्यूसडे को इंशाल्लाह करेंगे ऑन। Okay? Yes. That's it for today. I'll see you again on Monday, inshallah. Allah Hafiz.